Now, students will be going for the mathematical relation for coefficient of restitution, students. Okay, and we'll be finding out the final velocities of the two body, students, after collision. If you recollect, students, I told you about law of conservation of linear momentum, students, and the law of conservation of linear momentum states that law of conservation of linear momentum states that, students, in absence of external force, since the total momentum of the body remains constant. Okay, so the total momentum of the system remains constant or is conserved. So that is, we say that the initial momentum of the body is equal to the final momentum of the body after collision. Initial momentum I can consider it's m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2, students. Is this clear to all of you all? Yes, sir. Students, do you all remember the derivation for this? Yes, sir. I had done it in the last lecture, students. In the last lecture, I derived this, and I told you all to write down in terms of initial velocity, u1, u2, v1, v2 is the final velocity. Okay. Is it clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now, students will be going with respect to your so-called as your elastic and inelastic collision, students. Now, when somebody asks you, students, what exactly elastic collision or what exactly inelastic collision is, then students do keep in mind, in case of elastic collision, students, whether it's head-on or oblique, we consider, students. In terms of collision, suppose if I happen to go for in collisions, if I speak about elastic or inelastic, you getting it? Then in that case, students, what exactly we consider as elastic collision? Over here, students, kinetic energy is conserved. That means, students, your initial kinetic energy will be equal to final kinetic energy. The change in kinetic energy will be zero. क्या ये clear हुआ, students? Elastic collision के अंदर? हाँ, students? Yes, sir. Whereas inelastic collision में ये यहाँ पे, students, kinetic energy is not conserved. That is, change in kinetic energy is not equal to zero. Means there is some amount of loss in kinetic energy, students. There is some loss in kinetic energy. This is the main point of difference between elastic and inelastic collisions. Students, दोनों केस में linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. And if I happen to go for elastic collision या inelastic collision, students, दोनों केस में linear momentum conserved है. लेकिन what about kinetic energy? यहाँ पे kinetic energy is conserved, यहाँ पे kinetic energy is not conserved. यानी यहाँ पे initial kinetic energy is equal to final, यहाँ पे initial is not equal to final. There will be some change in kinetic energy which is not equal to zero, students. This is a point to be taken care while you are speaking about elastic and inelastic collision, students.
Now, when I speak about kinetic energy, students of the system, then what is the initial kinetic energy? Then it will be half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square, students. The initial kinetic energy is equal to final kinetic energy, students. So this is what the relation for kinetic energy, and this is the relation for linear momentum, students. Now from here onwards हम ये find out करेंगे कि elastic collisions precisely कभी बोला जाता है. That depends on to a variable called as coefficient of restitution, students. So now we'll be going for deriving the formula for. Derive the formula for coefficient of restitution, and that is denoted by variable E. Students, ये coefficient of restitution से तुम्हें पता चल सकता है कि कौन सा collision है, elastic या inelastic collision, which we are going to speak after this part of it. क्या ये clear हुआ, students? Yes. Yes, sir. Sir, ये जो आपने formula दिया half m1, that is, this formula is of. This is kinetic energy. अगर मैं बोलूँ कि initial kinetic energy है, तो initial kinetic energy of the two bodies before collision. और अगर मैंने इसको equal कर दिया final kinetic energy of the two bodies after collision, अगर मैं change लूँ final minus initial, अगर मुझे आंसर equal to है तो change क्या हो जाएगा, 0 होगा. यहाँ पे ये दोनों equal नहीं होगा. There is some change. तो समझ में आ रहा है? यो समझ में आ रहा है? Sir, could you say it once again, please? हाँ? Could you say it once again, please? What? Did you understand this derivation yesterday when I did it? हाँ sir. Sir, क्या हो रहा था? and मुझे this- बताओ. नहीं, मुझे बताओ. ये जब derivation किया था तो यहाँ पे क्या हो रहा था? What exactly the derivation was speaking about? कुछ याद है? that was after compression. What happens? That is in. This was the compression part. You, what are you speaking? Now I'm no more speaking about spring contact. Hello, I'm not speaking about spring collisions. Spring collisions हो गया, उसका problem भी किया हम लोगों ने एक. Hello, Pew, where are you? You are lost. ये तुम्हारा head-on collisions वाला है. ये derive नहीं किया था. Students, did I derive this? That's what I asked you all first. हाँ, students, ये derive नहीं किया था formula. Two bodies are moving in the same direction. U1 is greater than U2. At time t instant, they collide with each other. There's a force exerted on 2/1, force exerted on 1/2, equal in magnitude, opposite in direction. Force is equal to mass into acceleration. ये सब नहीं बताया था? Students, I'm asking you all, rest of you all, did I say about that or not? अरे? I'm asking you all something. Did I Yes, sir. derive this formula? हाँ या ना? Yes, sir. तो फिर why you are so Veer, Taksh, Rishika, Pratham, Neha, what are you doing? Neha, what about you? Yes, sir. Anita, what about you? Khargar students, tell me about it. Because I feel like that from Mira, only one student is attending lectures. Only Pew is the only one who's attending lectures. And Kushali. मैंने ये डिराइव किया था कि नहीं किया था स्टूडेंट्स, मुझे बताओ. Sir, you give that कि spring जाता है फिर वो तक फिर उसके बाद में करवाया है. उसके बाद वाला यही डेरिवेशन का फॉर्म. हाँ सर, आपने कराया था हेड ऑन कोलिजन का. तुम लोग लिखते नहीं हो, तुम लोग इनकम्प्लीट रखते हो. रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो. This is something ridiculous. I never expected. सर कराया था आपने फिर F2/1 equals to हाँ, force N2A2 exerted on वो सब. 2/1, force exerted on 1/2, हाँ mass into सर. acceleration, फिर rearrange terms करके तभी जाके ये फॉर्मूला आया ना हमें. हाँ Yes, sir. तो वो वाले बात कर रहा हूँ मैं. और ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया, क्योंकि वो दोनों बॉडी मोशन में है. तो अगर मोशन होगा तो उनको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी.
कोलिशन के बाद में भी। लेकिन मैंने क्लियरली बताया था कि जब भी एनर्जी की बात करोगे तो साइन कन्वेंशंस नहीं यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्केलर पार्ट है, और यहाँ Yes. पे साइन कन्वेंशंस यूज होगा क्योंकि ये वेक्टर पार्ट है। Yes, sir. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इलास्टिक कोलिशन कभी हो सकता है और इनइलास्टिक कभी हो सकता है। कैन आई erase this part, students? Yes, sir. Okay. Students, यहाँ पे elastic और inelastic collision, you can give a simple example also onto this. Suppose now if I say a body of mass m1 is moving with a velocity u1, and another body of mass m2 moving with a velocity u2, and u1 is greater than u2. So what's going to happen? They can have a collision in that case. Now after collision, suppose if I say they collide with each other, and after collision, if I say that the two masses now can move either in the same direction. अगर यहाँ पे मैं case 1 लेता हूँ students and case 2 after collision, this is at time of impact. Okay, case 1 में I can take it कि suppose अगर body 1 का डायरेक्शन इस तरफ चला जाता है और बॉडी 2 का डायरेक्शन इस तरफ जाता है, तो इसकी वेलोसिटी ये होगी, फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ये होगी। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यू कैन गो फॉर योर साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ पे तुम्हारा मोमेंटम सर m1u1 प्लस m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. That's what we call as law of conservation of linear momentum is conserved. यहाँ पे हो सकता है कि एनर्जी भी कंजर्व हो सकती है स्टूडेंट्स। I can consider, yani your initial kinetic energy, if I take it equal to final kinetic energy, that is change in kinetic energy is equal to what? Final minus initial. And if that is equal to 0, ये कौन सा collision हुआ? ये हुआ elastic collision. जहां पे half m1 u1 square plus half m2 u2 square will be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square होगा। लेकिन अगर after collision students, if both the bodies moves with same velocity after collision, दोनों एक ही velocity से move करता है, तो momentum is conserved students. Momentum linear is conserved, but not necessarily that the energy is conserved. फ्रेंड्स यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, यानी मैं लिख सकता हूँ m1u1
plus M2U2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा, सो दोनों एक साथ में जा रहे हैं, both of them are stuck to each other, so I can write as M1 plus M2 into V, है ना, दोनों बॉडीज एक साथ में चिपक के आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी अगर मैं लिखूं तो एनर्जी नॉट नेसेसरीली कंजर्व, यानी तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब मैं पूछूं व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, तो बोलेगा सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों का हाफ m1 प्लस m2 into v स्क्वायर होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, इनिशियल इसका होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एनर्जी कंजर्व नहीं है ना, तो your kinetic energy is not equal to, यानी change in kinetic energy is not equal to 0. That means there is some loss in energy. Yes. What are these collisions are called? These are called as inelastic collision. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये कौन सा कोलिशन मालूम है स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग्स वगैरह का नहीं है, पीओ स्प्रिंग खत्म हो गया, जमाना हो गया स्प्रिंग को खत्म होते हुए। Yes, sir. अभी Yes. हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई गेटिंग इट? Yes, sir. ओके, तो हम अभी क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उससे हमें और भी पता चलेगा करके कि व्हाट एग्जैक्टली योर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिशन एक्चुअली मींस। कैन आई इरेज दिस पार्ट स्टूडेंट्स? No, no, no. 1 minute, sir. ओके, yes students, can I erase it? Yes, sir. Wait, sir. Wait. Okay. Now few students from Mirror branch have joined in. Yes, sir. Done. Okay. So please students be very careful while understanding the concept of this collisions part of it, okay? Now we go for the formula for coefficient of restitution, okay? Coefficient of restitution students. So the first formula what we got was M1 U1
plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, linear momentum conserved. Agreed? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ students? I'm trying to take identical terms together. So what am I trying to do students? मैं u1 और v1 को साथ में लेता हूँ, तो it's m1, okay? Into bracket क्या कर रहा हूँ? u1 minus v1 ले रहा हूँ, and over here m2 in bracket v2 minus u2. This is my equation number 1. Secondly, I'm going for kinetic energy is conserved. That is half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square students. तो ये क्या है? Mechanical energy is conserved. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? We'll try to rearrange the terms. Rearranging में क्या करूंगा? u1 और v1 को साथ में लेता हूँ students. Therefore, half m1 u1 square minus v1 square, agreed, is equal to half m2 v2 square minus u2 square. This is my equation number 2 students. Is it clear? Yes, sir. Now what I'll do, I'll take the ratio of 2 with respect to 1, divide karo. So when I try to go for equation 2 divided by equation 1 students, what am I going to get it? So it's half m1. Can I say this is a square minus b square? So it's a minus b, a plus b divided by equation number 1 में क्या है? Sir, it's m1 into bracket u1 minus v1 equal to यहाँ पे half m2 into bracket a minus b and a plus b divided by m2 into bracket v2 minus u2. So do we have any cancellation students over here? बोले हाँ सर, ये जो हाफ है वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, m1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, m2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, u1 minus v1 कैंसिल हो जाएगा, v2 minus u2 cancel. Therefore, what I'm going to get it, sir, it will be u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. Are these in terms of vector notation? Yes, you can put in terms of vector notation. Doesn't matter because these are vectors itself. अगर मैं इसको rearrange करूँ students, what am I going to get it? I'm going to get the ratio. Students, if you carefully look into it, अगर मैं v1 को यहाँ पे लेता तो can I say it's a ratio of v2 minus v1 upon u1 minus u2? हाँ students, v2 v1 को यहाँ पे ले लिया मैंने, u2 को यहाँ पे ले लिया मैंने, रेशियो ले लिया. ये जो रेशियो है ना स्टूडेंट्स, v2 minus v1 upon u1 minus u2, this is called as E, and that is called coefficient of restitution. अरे स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन है क्या? इसी का रेशियो है. मैंने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया स्टूडेंट्स. आई जस्ट ट्राई टू रीअरेंज द टर्म्स. व्हाट इज द रीअरेंजिंग टर्म्स आई डिड इट? The rearranging terms was did in such a manner that it was v2 minus v1. Students, what is v2 minus v1? Then you'll say, sir, it is the relative. ध्यान से सुना students. It is the relative velocity of two bodies after collision to the relative velocity of same two bodies approaching before collision. यानी ये u1 u2 है क्या? तो तुम देखो ना सर, u1 u2 तो ये दोनों का वेलोसिटीज है, अप्रोचिंग है ना. u1 u2 के पास जा रहा था, फिर कोलाइड हुआ. v1 v2 क्या है? उनकी फाइनल वेलोसिटी है. तो ये v2 किसकी है? सिर्फ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी. v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी. बीच में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है. तो कैन आई से इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इसको हम लिख सकते हैं ऐसे v2 minus v1.
या यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन One with respect to two. Yes. यानी u1 minus u2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेम टू बॉडीज अप्रोचिंग बिफोर कोलिजन, दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. So E is simply a pure ratio. Students, E is simply a pure ratio. It's a ratio of two velocities. ये भी मीटर per second, तो ये भी मीटर per second. Therefore, coefficient of restitution has no unit. It is dimensionless. It is dimensionless. Are you getting, students? Sir, why it is dimensionless? ये क्या है? Velocity. ये क्या है? अच्छा, okay. Velocity. हाँ, क्या ये? Velocity. ये क्या है? Velocity of two with ये respect. क्या है? Sir, velocity with one respect to. तो फिर यूनिट होगा उसको? No, sir. It's a pure number. It's a number. It's a numerical value. It's a pure ratio. It has no unit. Units gets cancelled. Yes, sir, understood. Okay. So students, coefficient of restitution is simply the ratio of relative velocity of the two bodies after collision to the relative velocity of the same two bodies before collision we can consider. ये तुम्हारा coefficient of restitution भी consider. Now suppose अगर मैंने ये दिया कि suppose अगर change in velocities of the two bodies are equal. So the difference is, अगर suppose मैंने ये numerator को equal to denominator ले लिया, तो what's the value of E? The value of E will be equal to what? 1. है ना? Yes, sir. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या मालूम है? प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. सपोज अगर ये एक बॉडी है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ना? दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है. कोलिजन के बाद में स्टूडेंट्स, कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी बन जाती है 5 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड. तो अभी मुझे बताओ कोलिजन के बाद में ये है, ये क्या है? बिफोर. और ये क्या है? आफ्टर. Kinetic, this is u1. Yes. Kinetic, this is u2. Yes. What is u1 minus u2 का आंसर कितना होगा? 10 minus 5 कितना होगा? 5. 5. आफ्टर में ये क्या है? v1. ये क्या है? v2. दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. Let us say it's going in the same direction. What is v2 minus v1? 10 minus 5. यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 5. What is my answer for E? 5. तो अगर तुम्हारा E का वैल्यू is equal to 1, then this is called as perfectly elastic. That means the collision is perfectly elastic. समझ में आया? यानी perfect elastic collision क्या होता है? जहां पे coefficient of restitution की वैल्यू 1 होती है, यानी दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई. लेकिन अगर मैंने बोला कि दोनों बॉडी, इस ध्यान से सुना, इसकी 10 है, इसकी 5 है स्टूडेंट्स, लेकिन आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज आर गोइंग टुगेदर and they have a velocity of 8 meters per second. Students, so what is the final velocity of the second body? 8. Final velocity of the first body is also 8. दोनों के velocity 8 है ना, यानी दोनों साथ में जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 8 minus 8 क्या हो जाएगा? 0. डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर तो 10 minus 5 ही होगा ना. 5. तो 0.5 का आंसर क्या होगा? 0. यानी अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 आती है तो ये कौन सा होगा? दिस कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन इज परफेक्टली Inelastic. अरे क्या बात है, तू तो समझ गई रे. क्यों समझ गया? नहीं, पूरा क्लास समझ गया. Are you getting it? यानी स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ E is always greater than 1, less than 0. ये है प्रैक्टिकली अगर तुम देखोगे तो वैल्यू ऑफ
E, are you getting it? Will be, sorry, it will be less than, very sorry. E is greater than 0. E is what? Greater than 0, but less than 1. Students, E is greater than 0, but less than 1. Practically. यानी जब भी तुम एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अप्रोच करोगे ना, तो E की वैल्यू हमेशा तुम्हें 0 और 1 के बीच में मिलेगा. समझ में आ रहा है? 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा. लेकिन जब भी तुम प्रॉब्लम्स में, अगर कभी प्रॉब्लम में वर्ड परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया, परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया, तो कैन यू टेक द वैल्यू ऑफ E कैन बी इक्वल टू 1? यस. अगर परफेक्टली इन इलास्टिक लिया तो कैन यू टेक वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 0? यस. बट दिस इज थियोरेटिकल. स्टूडेंट्स, ये थियोरेटिकल है. प्रैक्टिकली ऐसा कभी कोलिजन्स होता ही नहीं है. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक फिजिक्स में इज नॉट पॉसिबल. हाँ, हम प्रॉब्लम्स बना सकते हैं इसके ऊपर, हम प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, यानी थियोरेटिकली इट कैन बी पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल. तो जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो 10 में से 7 प्रॉब्लम E की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9. 2 या 3 प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहां पे वर्ड यूज करेंगे परफेक्टली इलास्टिक, तो E को सीधा 1 ले लेना है. जैसे तुमने E को 1 ले लिया, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे. E को अगर तुमने 0 ले लिया, यानी दोनों का वेलोसिटी सेम है आफ्टर कोलिजन्स. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Everyone. So Yes, sir. whenever they Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes, हाँ, नेहा क्या बोल रहे हो? नेहा, what are you saying, नेहा? So what if that collision is in ratio? Which type of it is collision? What if it is in ratio? What type of ratio का मतलब? No, तो मतलब 0.5 0.1, 0.1 तो मैंने 1/10 ही तो बोला मैंने. 3/4 is also a ratio. 0.75. Is it less than 1? Yes. आया ना? Yes, sir. तो रेशियो में तो होगा, तो तुम्हारा इट कैन बी एनीथिंग. सर तो फिर उसे कौन सा collision बोलेंगे? हाँ, तो उसमें फिर तुम्हें फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट बनेगा. अगर तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, तुम इनिशियल फाइंड आउट करो, उसका टोटल निकालो और फाइनल का टोटल निकालो. अगर दोनों मैच हो रहा है तो वो इलास्टिक हो जाएगा. लेकिन Okay. अगर मैच नहीं हो रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो वो इनइलास्टिक हो गया. Okay, करेक्ट? sir. Yes, sir. हमेशा तुम्हें वो वाला करना पड़ेगा. यानी स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना कि मोमेंटम दोनों केस में कंजर्व होगा. इलास्टिक और इलास्टिक दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज ओनली कंजर्व फॉर इलास्टिक, इट्स नॉट कंजर्व फॉर इनइलास्टिक. Hope this part is clear to all of you. Yes, sir. Can I erase the students? No, sir.
Can I erase students? Students, can I erase it? Yes. Students, do keep in mind, now we'll be solving certain Sir, problems. एक second. हाँ, done. Okay, आ रहे हैं. Okay, students. Now we'll try to find out what ये जो दो bodies हम लोग लेते हैं students, okay? We know that the two object students, okay? One is mass m1, another mass is m2, okay? This has a velocity u1 and this has a velocity u2. Now students, let us find out their final velocities after collision. Students, हम वो वाला find out करते हैं. Okay, we need to get the value of v1 and v2, okay? Because this will be very important for you to solve it further at students. अगर तुम्हें at the end of it, if you happen to consider students, you have come across coefficient of restitution के अंदर students, तुम लोग ने अगर ध्यान से देखा होगा students, you must have come across u1 minus u2 students is equal to v2 minus v1. ये clear है students? ये जो ratio हम लेंगे that will be equal to e. हाँ students, क्या ये clear है? Yes. Now from here students, अगर मैं v2 को subject बनाऊं students, what exactly v2 will be? तो v2 क्या होगा sir? It will be u1 minus u2 plus v1. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. यहाँ पे v1 क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मैं v1 को सब्जेक्ट बनाऊं तो व्हाट इज v1? v1 क्या हो जाएगा? तो इट विल बी v2 minus u1 plus u2. हाँ स्टूडेंट्स, agreed? Yes, sir. What are we trying to find out students? We are trying to find out that the two bodies after collision students, what is the final velocities of the two bodies after collision? इनका हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला की जरूरत है स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम प्रॉब्लम्स में यूज करोगे. यानी स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स इसको याद कर रहेगा या कोई स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिराइव करके भी ले सकते हैं. यानी दो पार्ट है. व्हाट आई एम डूइंग इट स्टूडेंट्स, मैं एक पार्ट करता हूँ, दूसरा तुम अपने आप से आंसर निकालना. मेथड इज एग्जैक्टली द सेम. तो व्हाट डिड आई डू स्टूडेंट्स? I've taken a mass m1, initial velocity u1, mass m2, initial velocity u2 students. उनका collision होता है, collision के बाद में उनका final velocity v1 and v2 है students. They have velocities v1 and v2, but as per the coefficient of restitution, I can also consider u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. यहाँ पे मैंने v2 को subject बना दिया. अभी मैं क्या करूँगा students? I'll try to substitute this where in the equation. Which equation? Students, तुम्हें पता है हम लोग ने एक equation हम लोग ने लिया था. कौन सा equation? If you recollect, what is the equation we consider? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जहां पे मैंने m1 को कांस्टेंट रखा था. तो m1 कुछ किसी को याद है स्टूडेंट्स? m1 को मैंने क्या m1 इन ब्रैकेट क्या लिखा था? हाँ स्टूडेंट्स, u1 minus v1, एग्रीड, इज इक्वल टू m2 into bracket v2 minus u2. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये कहाँ से आ रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये तुम कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स? हाउ डू यू रिमेंबर? इट्स वेरी इजी फॉर वन टू रिकलेक्ट एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम देखोगे आफ्टर कोलिजन पहले बॉडी की वेलोसिटी कम होगी तो u1 इज ग्रेटर देन v1. स्टूडेंट्स, ये बॉडी की वेलोसिटी इससे ज्यादा है, कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. अगेन यानी फाइनल वेलोसिटी इज लेस. लेकिन सेकंड केस में क्या होगा? v2 इज ग्रेटर देन u2, यानी डिफरेंस तुम्हें पता चल जाएगा. Now we are going to use this equation to get the velocity. अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? ये जो v2 है स्टूडेंट्स, aggregate, I'm going to substitute this v2 back over here in this equation. अगर मैं v2 को substitute करूंगा, can I get my equation for v1? Yes.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं सॉल्व करूंगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे मैं V2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा और मैं V1 का वैल्यू निकालूंगा, और तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, V1 को सब्स्टिट्यूट करना स्टूडेंट्स, ओवर हियर यू विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट V1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट V2 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट V1 in this equation number 1, equation 1, in equation 1, in equation 1। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now let us substitute it. So I'm putting back the equation, students. What's my equation will be? Sir, ये होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अभी नाम पढ़ेंगे। It's m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 into bracket v2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, u1 minus u2 plus v1 minus u2। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये पार्ट के लिए स्टूडेंट्स, it's for this part. Agreed? So Yes. can you shift your phone little bit? Pardon? Can you shift your camera? I'm not able to hear you. Can you be loud and clear? Yes, what happened? Who's that? Who was saying? Somebody was saying something. Sir, she was telling to shift your cam, but now it's Oh. okay. नेहा तो Sir, वापस बोलो। Sir, it's okay. तो ओके क्यों बोला? तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। So Nothing, earlier sir, it is wasn't okay. visible, but now it's okay. पहले ओके बोलते हो और विजिबल बोलते हो, क्या है? अच्छा फाइन, ध्यान से सुनो सुनो। सब पहले नहीं दिख रहा था। ओके फाइन, यू तो हंस रही है नेहा। स्टूडेंट्स अभी देखो, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे ये आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ये है m1 u1 माइनस m1 v1 m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 minus m2 u2. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now students, what I'll do, I'll try to take v1 terms together students. मैं v1 terms को साथ में ले लेता हूँ students. So now if I happen to write down, it'll be m1 u1, ये term यहाँ पे ले लेता हूँ, that's minus m2 u1. Agreed? This minus m2 u2 minus m2 u2 students, can I say this is minus 2 m2 u2? Yes, sir. Can I take it on the other side? So can I put this as plus 2 m2 u2? Agreed? Yes, sir. राइट हैंड साइड में क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये m1 v1 और m2 v1, अगर मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ तो माइनस का प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। Yes, sir. सो नाउ कैन आई से इट्स m1 प्लस m2 इनटू v1। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ध्यान से देखो, m1 माइनस m2 इनटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 upon m1 plus m2 into u2 is equal to v1. Did I get the final velocities of the first body after collision? Yes, sir. Students, ये बहुत ही important formula है। मैंने किया क्या है students? I've just tried to see to it। तो मैंने ये जो m1 u1 और m2 u1 इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया है ना, इन दोनों को साथ में ले लिया और इसको इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने माइनस में, फिर उसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ। यानी स्टूडेंट्स ये मुझे इक्वेशन मिला था बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मैंने क्या किया, v2 को सब्जेक्ट बनाया और v2 को मैंने यहाँ पे डाल दिया तो मुझे v1 का फॉर्मूला मिला। अगर मैं सब्स्टिट्यूट v2 करता हूं तो मुझे v1 का आंसर मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं v1 को सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, ये v1 को अगर मैं यहाँ पे, तो मुझे किसका फॉर्मूला मिलेगा?
V2 का V2 formula. का. What are we trying to find out? We are trying to find out the final velocities of the two bodies after collision, students. और ये formula बहुत important है, हमेशा use होगा. Every time it will be used. So students need to memorize this. Or how do you consider V1 क्या होगा? M1 minus M2 upon M1 plus M2 into U1. 2M2 upon M1 plus M2 into U2. ना सपोज अगर मैं दूसरे का आंसर निकालता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? व्हाट एग्जैक्टली फॉर्मूला आई एम गोइंग टू गेट इट? द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी. हाउ डू यू गेट इट? यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी M2 minus M1 रिवर्स. U1 की जगह पे क्या होगा? U2. डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, प्लस साइन. यहाँ पे 2M2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2M1. U2 की जगह पे क्या होगा? U1 अपॉन M1 प्लस M2. ये होगा फाइनल वेलोसिटी. ये कभी होगा स्टूडेंट्स? जब भी मैं V1 को सब्स्टिट्यूट करूं. These are the two velocities which a student should keep in mind while solving problems onto head-on collision, students. Now I want you to get this formula by yourself. अभी तुम क्या करो? ये तो मैंने किया है. अभी तुम क्या करो? सेकंड पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन करो. This is the second part का substitution, and this becomes your answer. Substituting V1 in equation 1. Exactly ऐसे solve करो, rearrange the term करो and try to get this answer. Let's see whether you're getting the answer or not. Is this clear? Everybody please solve this part. Pause. Students, hope you understood what am I trying to tell you. Are you Yes, getting sir. it? Okay, please try to get it. और तुम्हारा आंसर इससे मैच होना चाहिए. अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर नहीं आता हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तुम्हारा फॉर्मूला इससे मैच होना जरूरी है. M2 minus M1, U2 यहाँ पे आना चाहिए, M1 यहाँ पे आना चाहिए, U1 यहाँ पे आना चाहिए, with a plus sign in between. Do it very carefully, rearrange the terms very properly. And your subject is V2.
Yes, students, done? Students, done? Yes, sir. Getting the answer or not, students? Yes, sir. Students, are you all getting it, everyone? Students, are you all there? Yes, sir. Okay, can I erase it now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, students, I'm keeping both these formulas right now in front of you itself only. Okay. So whenever you're trying to do problems based on to collision, students, head-on collision, students, do keep in mind about law of conservation of linear momentum. Kinetic energy is conserved. That part you keep in mind. Okay. Final velocity of the first body after collision, final velocity of the second body after collision, and the coefficient of restitution. And the coefficient of restitution, students, it's E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2. Okay. Do keep this in mind. It has no, it's a pure ratio. Okay. It has no unit. Now, students, let me give you a question, students. Please pay attention. The question is, students, they are given to you that is there are two particles of M and 2M. Okay. Moving in opposite directions. Students, please pay attention. Consider two particles. Okay. Consider two particles of mass M and 2M. Students, consider two particles of mass and M and 2M moving in opposite directions. Moving in opposite directions, collide elastically. Students, they've given to you. Collide elastically, students. Okay. Collide elastically with velocity v and 2v. यानी students, इसका velocity v है और इसका velocity 2v है. Listen carefully. Students, two bodies, एक का mass m है, दूसरे का mass 2m है, students. Both of them are moving in the opposite direction with a velocity v and 2v, students, given to you. Question asked is, find their velocities after collision. Find their velocities after collision, students. Is the question clear? Students, is the question clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Get me the answer now.
Yes, anybody can tell me how to go about with this, students? Students? Students, can you tell me what is the initial velocity of the first body? Is it going along positive x-axis? So plus v आएगा कि नहीं आएगा? Students? Yes, sir. Yes, sir. What is the initial velocity of the second body? Is it going in the direction opposite? Minus 2v. Negative direction. Agreed? Yes, sir. Sir. I want v1 and v2 of the two bodies, so I can put in vector form also. Now, can I substitute value, students? Let us find out v1. So v1 क्या होगा? Students, what is formula for v1? v1 is m1 minus m2. Can I say this is m1 and this is m2? Agreed? Yes, sir. So m1 minus m2. So can I say this is m minus 2m upon m plus 2m into u1. How much is u1 plus v? क्या ये clear हुआ, students, everybody? The first part. Yes, sir. Plus 2. How much is m2? 2m into u2. What is u2? Minus 2v upon m plus 2m. Is this clear, students? Yes, sir. So solving it further, what is v1? M minus 2m is minus m. Minus m into v is minus mv upon 3m. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Plus into minus, minus 2 2s are 4, 4 2s are 8. So can I say this is 8mv upon 3m? Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Cancellation, m and m will get cancelled. M and m will get cancelled. So what's my answer? Minus v by 3 minus 8v by 3. So what's my final velocities of the two bodies? Because the final velocity of the first body, students, after collision, 3 is a common LCM, minus 8 minus 1 will be minus 9. Minus 9 upon 3v. So can I say my answer is minus 3v? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. यानी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पहला बॉडी का वेलोसिटी v है, दूसरे का वेलोसिटी 2m 2v है. ध्यान से सुनना, दूसरा वाला हेवियर मास है, पहला वाला लाइटर मास है. ये दोनों आ रहा है, टकरा रहा है. तो लेकिन पहला वाला लाइटर होने की वजह से टकराने के बाद में वो रिकॉइल होगा. नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? वो अपना डायरेक्शन वापस चेंज कर रहा है. और वेलोसिटी देखो 3 टाइम्स हो गया. While going, it was going with the velocity v, but now it's 3 times v. Did you get it? How did I use this formula now? And this is put with vectors. I can use vectors. Why not? क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Everyone. Yes. Can you get the answer for Yes, V2? V2 का answer निकाल सकते हो, students? Can you get the answer for V2 now? Use this formula. If I want to get the answer for V2, students, what exactly V2 will be? M2 minus M1, M2 minus M1, 2M minus M will be M upon 3M into U2. How much is U2? Minus 2V plus 2. How much is M1? M1 is M into U1 plus V upon 3M. Solving it further, M and M will get cancelled. Minus 2V by 3. This M and M will get cancelled. This is plus 2V by 3. What is my answer? 0.
Students, the first body goes towards positive x-axis, second body is going with second velocity, but after hitting, students, the first body will recoil with 3 times and the second body will be brought to rest. Second body will be brought to, क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. सर और नहीं समझ में आया कौन सा वाला नहीं समझ में आया, स्टूडेंट्स? सर वो 0 कैसे आया वो आंसर ये देखो ना, m2 कितना मुझे बताओ, 2m माइनस m कितना होगा? m m हाँ, m प्लस 2m कितना होगा? 3m और u2 कितना दिया है? -2v ओके, तो -2b डाल दिया, एग्री? लेस सर प्लस साइन आ गया, 2 हाँ m1 कितना है? m1 कितना है? m1 m m, ओके, u1 कितना है? हाउ मच इज u1? v प्लस v, और ये हाँ कितना होगा? 3m होगा। तो देखो ना, ये न्यूमरेटर में m, डिनोमिनेटर में m का कैंसिल, तो -2b/3 आएगा, हाँ सर और ये m and m कैंसिल हो गया, और प्लस इंटू प्लस प्लस 2b/3, ये प्लस 2b/3 होगा, एक माइनस और एक प्लस कैंसिल हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है हाँ सर समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यानी when you are trying to solve questions, think in that manner, you'll be able to get the answer easily. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्टूडेंट्स, और एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, वन मोर फॉर्मूला आई एम गिविंग यू स्टूडेंट्स। whenever students, अगर suppose कोई moving particles दिया, moving particle of mass m makes a head on collision with another particle, students अगर एक particle दूसरे particle से head on collision करता है, are you getting it? And if in case question पूछा है, ध्यान से सुनना, if two bodies are undergoing a collision, students, and head on elastic collision, and if the question asks students, ध्यान से सुनना, find out fraction of, students, find out fraction of change in kinetic energy to the initial, that means find out change in kinetic, यानी initial minus final upon initial। अगर तुम्हें ये पूछा kinetic energy initial minus kinetic energy final upon kinetic energy initial, then students your formula will be, the answer is, your formula will be 4 times m1 m2 upon m1 plus m2 the whole square। Students, k initial minus k final upon k initial, fraction of kinetic energy initial, formula क्या है? 4 times m1 m2 upon m1 plus m2 the whole square। Please do take care of this formula also, and one can easily derive this formula also, students. सर वो अच्छे से दिख नहीं रहा है You're not able to see it? लाइक द मार्करिंग थोड़ा लाइट है Okay, wait a minute. दिख रहा है सर। Nah, it's not like that. He's not able to see it, no, my dear. अरे पीयू तेरी आंख बहुत अच्छी है। अरे पीयू, You should wear specs, no, like me. अभी क्लियर है? यस Are you getting it? Do keep this in mind, students, when you're solving questions on board, okay? Can I erase this, students? इसको erase कर दो अभी मैं। Yes, sir. Now, students, it's the last part which I need to speak about is your oblique collision, students. Just one formula I need to give you, okay? Regarding your oblique collision, students. इसको erase कर दो, students? Yes, sir. Yes, Okay. sir.
Now students, oblique collision के अंदर please do take care of this. अभी ध्यान से सुनो students. Oblique collision का मतलब क्या है students? Think as if this is ये है तुम्हारा oblique collision. So this is a line of impact. Oblique collision में क्या होगा students? The body doesn't go along the line of impact. ये ध्यान में रखना students. It doesn't go along the line of impact. यानी जब भी तुम इसका डायग्राम देखो तो स्टूडेंट्स तुम्हारे हाथ में एक बॉडी m1 है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. दिस इज m1. Okay, this m1 is moving with a velocity u1. दूसरी जो बॉडी है स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू कीप इट ओवर हियर समवेयर. आई एम ट्राइंग टू कीप इट ओवर हियर. Okay, this is m2. Okay, and this is going with an initial velocity students. It's going with an initial velocity u2 students. Okay, but now suppose अगर मैं बोलूं कि ये u1 है students और ये u2 है students. Now if I say that u1 is greater than u2, क्या होगा students? What's going to happen? Students, if u1 is greater than u2, what's going to happen students? को बता सकता है क्या होगा? तो कोलाइड करेंगे और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे. Of course, the motion will not be in the line of impact students. ये इसको कोलाइड करेगा तो m1 का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? सर m1 का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, है ना? और m2 का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? सर इस तरफ जाएगा. Are you getting it? Yes. Now let us say that the Yes, two of sir. them will go in the direction. Let us say the two will go in the direction. One goes with an angle θ1, other one goes with an angle θ2 with the horizontal with the line of impact. Now the body m1 students will have a final velocity is what? u1 is the initial velocity students of the first body, u2 is the initial velocity of the second body. Now the first body students is moving with a velocity v1. And the second body students, it's going with a velocity v2. Agreed? Yes, Agreed sir. students? लेकिन जब भी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लेना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लेना है, तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ओबेड with respect to what? Along a straight line. Students, collision oblique hai, but see the term I'm using it. What is the term I used it? I used law of conservation of linear momentum. That means now we need to go for same line of impact. And students, अगर तुम same line of impact अगर लेते हो, तो यही velocity को तुम्हें resolve करना पड़ेगा दो components में students. एक क्या होगा सर, यहाँ पे ये बॉडी का मोमेंटम होगा m1 v1 cos θ1, है ना? इस बॉडी का क्या होगा m2 v2 cos θ2. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ सर. Yes, sir. Agreed. Vertical components तो is of no use because we are trying to go for along the line of impact. हमें vertical components की जरूरत नहीं है, sin theta की जरूरत नहीं. ये हुआ तो can you tell me what is the formula for law of conservation of linear momentum यहाँ पे? What is law of conservation of linear momentum? The law of conservation of linear momentum, this will be along x-axis. Which axis? X-axis. So what it will be? So this is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2. Students, is this clear with all of your law of conservation of linear momentum? Yes, sir. Along y-axis क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैं पूछूं y-axis पे क्या हो रहा है सर, y-axis पे तो इक्वेट होगा. अगर मैं y-axis के बारे में जाता हूं स्टूडेंट्स, तो along y-axis क्या हो रहा है? What is happening along y-axis students? So along y-axis, we see students, what exactly is happening? Sir, along y-axis ये component क्या होगा? Sir, along y-axis अगर तुम देखोगे, तो along y-axis क्या होगा?
Sir, it's M1 V1 sin theta 1 will be equal to M2 V2 sin theta 2. ये कौन सा axis पे है? This is along y axis. ये कौन सा axis पे है? This is along x axis. And students, law of conservation of linear momentum is holding true along which axis? X axis. X-axis. और ये कौन सा एक्सिस पे है? Y axis. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. है Yes, ऑब्लिक sir. कोलिजन. अगर मैं बोलूं कि ये कोलिजन इलास्टिक है, स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोल दिया कि कोलिजन इलास्टिक है तो तुम क्या करोगे? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कोलिजन इलास्टिक? सर ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, तो तुम उनकी काइनेटिक एनर्जी लोगे ना? काइनेटिक एनर्जी में तो कंपोनेंट नहीं लोगे. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि कोलिजन इलास्टिक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? इफ कोलिजन इज इलास्टिक, collision elastic. So can I say initial kinetic energy will be equal to final? Students? Yes, sir. So what is initial kinetic energy? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Is this clear, students? Yes, sir. So students, whenever you are trying to go for oblique collision, students do take care of this. कि अगर law of conservation of linear momentum होगा तो students law of conservation of linear momentum component के साथ में होगा. Cos theta will be the component because it should be along the line of impact. अगर किसी ने पूछा what about the momentum along y-axis, so they are equal in magnitude, opposite in direction. m1 v1 sin theta 1 is equal to m2 v2 sin theta 2. अगर collision elastic है students, तो उसका मतलब क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी. अगर सपोज मैंने यहाँ पे इनइलास्टिक बोला होता ना स्टूडेंट्स, इनइलास्टिक बोला होता तो होता क्या सर? ये दोनों बॉडीज एक साथ में ही जाते हैं, लेकिन एक साथ में तो जा नहीं रहे, अलग अलग है. देखो m2 का डायरेक्शन इस तरफ गया, m1 हिट होगा, टेंजेंशियली हिट होगा और वो इस तरफ चला जाएगा. दैट इज व्हाई आई से दैट द कोलिजन इज इलास्टिक. सो जब भी ऑब्लिक कोलिजन होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला यू गोइंग टू यूज इट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So that is all we do it today, students. In the next lecture, agar hoga, to we'll continue further, but almost it's done, students. Okay. So it means we have completed the chapter system of particles. Yes, my dear. Okay. And in case if sir puts one more session in that case, then we'll be solving only questions onto this part of it. Okay, some more questions onto this. Is that clear? Okay, sir. Okay, sir. Making formulas, revise karte rehna. Is that clear, students? Yes, Yes, sir. sir. Okay, chalo, bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.